Good afternoon, sir. So you have to unmute. Eminent speakers, Mr. Bhatna and Ms. Rekha Agashe. She is the Executive Director and Managing Partner at High Sales Consulting Private Limited from Mumbai, a lean practitioner and global project management expert. Thank you both for sparing your valuable time to join us this afternoon. I'd also like to take this opportunity to share briefly about the PhD Chamber of Commerce and Industry. The chamber was established as far back as 1905 at Lahore, and for over 115 years now has been a catalyst for the promotion of Indian industry, trade, and entrepreneurship. It's a forward-looking, proactive, and dynamic pan-India apex organization. And as a partner in progress with industry and government, PhD Chamber, with a special focus on MSMEs, works at the grassroots level with strong national and international linkages for propelling progress, harmony, and integrated development of the Indian economy, which is what the acronym stands for, PHD, Progress, Harmony, and Development. We have a large membership base of over 1 lakh direct and indirect members, and we operate through 60 plus sectoral expert committees. Also at the global level, we work with embassies and high commissions in India to bring in the international best practices and business opportunities for the industry. I would also like to take this opportunity to announce that PhD Chamber is implementing GIZ MSME Inno program to handle MSMEs who have developed products and processes related to COVID in present times. Under the project, we are providing technical support to MSMEs and in this process, what we are doing is identifying the challenges and issues being faced by them in their business, models related to marketing, technology, productivity, compliance to quality standards, and offering relevant solutions for their growth. Some of you would have attended the first event in this series, which was on Sales Master E-Conference on the 9th of January. And today's program, as many of you would be familiar, is the second in the series. It's being organized to apprise industry members and MSMEs, business owners, and sales professionals on the tools and techniques to promote and drive institutional selling and strategies for building a robust sales process. We sincerely hope at PhD Chamber that all of you participants would benefit immensely from the program and welcome you all once again. And we do hope that you actively participate in the discussions to derive value from the program. Thank you all for joining, and over to you, Rimni. Thank you, ma'am. To take forward, I request our first speaker, Ms. Rekha Agashe, to kindly share your expert views, ma'am. Thank you, Rimnit. Thank you, PhD Chamber of Commerce. And I will just share my screen and start the presentation. So today I'm going to speak on how the B2B sales game has changed and how we are going to adapt to it to change for better. So just a second, I'm just sharing my screen. Okay. Yeah, we can see, ma'am. Yeah, thank you. So very good afternoon to you all. So we are going to understand how the sales scenario for the B2B business buyers has changed and how we are going to adapt to this change.
Now the buyer is in control of the sales process, and the spotlight in every department, in every organization, is on the sales department, which is the revenue generating department of the organization. So we are going to understand how we are going to deal with the changing buyer behavior so that we change for the better. Institutional sales adds volume, it brings in great volume, and it contributes to a larger part of the overall sales target, right? So we are going to just see into it. So what are the critical challenges? What are the critical challenges which the sales force is meeting at the moment? The critical challenges, as you can see, that 8% is, like due to the poor management, sales management function, or it could be because of, the sales staff not being trained properly. But what we see that the 49% of the critical challenge which the people are in the B2B sales are facing is that it is taking a longer time to close the deal. Like to close a deal, a deal close करने के लिए nearly 49%, it is a big challenge for the people. Now we will understand how are we going to face this challenge. So we see that there has been a shift in the buyer behavior. So previously जब कोई सेल्समैन किसी कस्टमर के पास जाता था, he used to give him ample time, 1 घंटा बैठता था, उसके साथ बात करता था, because तभी सिर्फ the salesperson was the person who could provide him the required information. He would provide him what is happening in the market. इसीलिए वो अपना कीमती वक्त he used to give to the salesperson. But today, what has happened? There is a shift in the buyer behavior. Today, at a click of a button, he has an access to lot of information which is available on the website, in his networks, in different forums. So he is not ready to, sort of give the kind of time to the buyer who is not providing value to him. So technology एक जो बात है कि टेक्नोलॉजी के कारण इट हैज बिकम इजी फॉर द बायर टू कीप और अवॉइड द सेल्स पीपल. जैसे अपने कॉल मैसेजेस हम लोग इजीली डिलीट कर सकते हैं, कॉलर आईडी ब्लॉक कर सकते हैं. सो अनवांटेड सेल्स पीपल ही डजंट हैव टाइम नाउ. ही हैज टाइम फॉर द सेल्स पर्सन who can provide him value, right? Similarly, because he's having an access to a lot of information, he already knows more about the product, he has a shorter attention time span. So he is telling to the salesperson that if you can understand my problem and if you can add value or you can help me solving that problem, only then तभी मैं आपकी सुनूंगा. I don't have much time for you. So his attitude is that why should I care for your sales pitch? तुम इतनी बड़ी बड़ी sales pitch देते हो, presentations करते हो, but if it is not ready to solve my problem, I don't have time for you. So this is a major shift in the buyer behavior that we are seeing in the organization. So with this changing scenario, we see that 29% of the buyers want to talk to the salesperson to learn more about their product. We see that 59% of the decision makers, they have already made that decision before they are talking to the salesperson of the company. 34% of the salespeople today said that it is very difficult to close a deal. It is getting harder by the day. Now, only 17% of the entire B2B buying process is spent in meeting the potential customers. So what does this mean? Does this mean that abhi sales people or the sales professionals will not be able to meet that target? They will not be able to meet the quota because the buyer behavior has changed. So we have to sit back and you have to ask yourself some questions, right? So you have to ask, what is the information? What is the information the buyer is looking for? What kind of information that I share with my buyer or what the content I share with the buyer is going to help him solve the problem? Is my company's website or my company's social media platform have the kind of content or the information which excites my buyer to look at me as a value added partner to him? So this is a question that we need to sit back and ask himself today before making any decision.
A company will go to 5 to 6 vendors, and only then it will take a vendor whom it wants to, do business with. So in that case, it is very relevant that the kind of content that you have on your website or you share on your social media network is very relevant to the customer to come to you and talk to you about, the need to solve his problems. So what we are saying that even though it has become very challenging to close new deals, if we understand the dynamics of the modern B2B business, and we learn the sales processes and strategies that will help you achieve it, I think you can go bigger and better in the coming year. So now the next time we are going to try what is the changing dynamics of the modern B2B sales or the institutional sales. So just to understand, in the earlier scenario, B2B or institutional sale was very easy. If a person wanted a product or a solution, he used to call up the vendor. The vendor अपने sales person को उसके पास भेज देता था. वो sales person उसको features, benefit, advantages of the product बताता था. If the customer liked what he is hearing, he would go ahead and make the purchase. It was a very simple process. So now we see that the buying process of the customer has changed. So what he does is that if he identifies a problem, first वो जब उसको लगता है कि उसे problem है, what he does is that he goes and does an online research. So he researches like, does anyone else also have this problem? He tries to find out what is there any potential solutions to his problem. So he is proactive. Today's customer is proactive, that when he has a problem, he has enough resources to find out whether he has any potential solutions to his problem. Then he is going to what is the next step that he is taking. वो social media पे जाके check करता है. He reaches to his friends. He reaches to the people in his network. He looks at all the online resources. Okay. He goes on online reviews. He's checking up on the Google reviews. He's also checking up whether he can get a free trial, right? So based on all this, he is going to do a buying decision. तो जब तक कस्टमर आपके पास आता है और आपसे बात करता है, 60 to 70% of the time he is sure what he wants, right? The customer is informed. So this is the change that has been taking place. First, the customer was completely dependent on the salesperson for the market update, for the product information. But today, we see that there is a major shift that the customer has a lot of information at the click of the button, right? So what do we do in this case? So the big change, as we say, ये जो जिलेबी आपको दिखाई दे रही है और ये concentric circles जो आपको दिखाई दे रही है, it talks about the big change that is happening. The customer has changed. He's using his resources. He's using the information available to him to make the buying decision. So we have seen that there is a big change in the way the customer is going or approaching the buying process. So we see एक नया सा B2B buyer आ गया है जो अपने को. So what are the traits of this new buyer? अभी हम लोग देखते हैं in the industry, majority of the decision makers are in the age of 18. Okay, so they are in the age of 18 to 45. They are young decision makers. They are the young business heads. They are technology savvy. So they know how to, use the social media, how to use the networking platforms to their benefits. So these are the people who value time more. They will spend their time where they are able to get value from the which vendor, right? The second thing we see that, as we saw in the earlier slide, the purchase time, the customer is taking a longer time to purchase. Now, statistics state that the length of the sales cycle in the last 5 years has increased by 22% because the customer is looking at various alternatives and options that he has with him to make a purchase. That is one of the reasons. The second is that there is a wealth of technology that is available to him, the wealth of information that is available to him. So he is going to go to that customer or to that salesman who is able to provide him with value, who is able to provide him with insight, and who is not going to push him for a sales. They no longer want people who are going to pressurize them to make a sale. Secondly, they trust on the word of mouth because the world has become a small global village.
So you can absolutely, the visibility and the reach has increased. You can tap in your network, talk in your friends. So definitely you can, take their experiences, you can take their reviews before you make any buying decision. Third but not the least, he conducts his own research also, as we said, to confirm what he knows. Now, last is he wants to reduce the perceived risk. जब मैं कोई प्रोडक्ट खरीद करता हूँ, I should be confident of my decision. I should not repent why I brought this product. ये आज का बायर समझता है. सपोज ही हैज बॉट अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम यू और एक वो कंपनी के प्रेजेंटेशन के लिए बैठ जाता है एंड योर सॉफ्टवेयर डजंट वर्क. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. तो क्या हो गया, आपकी क्रेडिबिलिटी आपके क्लाइंट के सामने चली गई, राइट? सो ही इज ट्राइंग टू बी टुडेज customer is trying to see that he does not repent the post purchase decision, and that is why he wants to feel confident that he is making a right decision purchasing your product. तो अभी हम लोग बात करेंगे कि सेल्स टीम के पास क्या चैलेंजेस आ गए. अभी इतने सारे मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं, तो सेल्स टीम की क्या चैलेंजेस है? सेल्स टीम की पहली चैलेंजेस है बिकॉज दे हैव एन एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, ही कैन नॉट इन्फ्लुएंस द बायर, right? His ability to influence the buyer has decreased because the buyer himself is capable of taking the decisions. So because of this excess of information, right? The second thing is that there is a misalignment between the sales and marketing. With the changing business scenario, if the sales and the marketing team is not going to be aligned, अभी ऐसा हो गया है कि marketing team is looking into the various aspects of the sales process. And the sales people, where are they involved? When the customer has made a decision and it reaches out to them, it helps them. The sales team उसको alternatives बताते हैं और उसको sales purchase करने में help करते हैं. So this has become the role of the sales people. So with the changing role, there is a misalignment in the sales and the marketing department, and which can cause a revenue loss to the company. The next thing is that skeptical sales messages today. People are very, they are very trustworthiness is not there. Whenever a salesperson sends a message or he is, getting in touch with them, they feel that the sales people have got some hidden agenda कि इसको अपना प्रोडक्ट भेजना है, इसे मुझे हेल्प नहीं करना है. He is not trying to solve my problem, he is trying to meet his quota. So this is a perception which the customer is having, and this is something is a roadblock for the sales people. So another thing that, as we said, that the buying decision, the recommendations from the friends, families, they are all influencing his buying decision, right? So today the things have changed. Now we will see how to overcome these modern sales challenges, right? So the thing is that the buyers rely on the content to guide them into the process. So ये इतना सारा information हम लोग बोलते हैं कि a buyer is having. So where is the opportunity for the sales people? Where is the opportunity for the sales department? Information is there. The opportunity lies whether he's having the access to the right information at the right time. So this is where the opportunity is there for the sales people. So he should be able to give value added information or value added content to the to his customer. So he has to prepare a content library and sort of, he could have a questionnaire which could answer frequently asked questions by his target audience in the different stages of the buying journey. So here is the opportunity. If he is able to answer the questions which the buyer is asking at different stages of his buying journey, he should be able to convert that customer faster. Now, the very important thing is that 95%, it is a statistic which I'm quoting, 95% of the buyers, they select a vendor. They will select that vendor which is giving him ample content. He's providing him ample information, right? At each stage of his buying process. 68% of the customers, they say they are very positive of the brand, which is sharing them content and which is giving them insights on, making the purchasing decisions. Okay, so this is what is happening right now. So when you get connected with the buyer and you are sharing useful information to him, he is going to build a trust, and that trust is going to convert into a good business relationship and which can help you convert a deal.
Now make the salesperson, here we are talking about the second problem, right? Now, in most organizations, you must have seen the sales people titles have been changed. First, they were called as sales managers, sales executives, but today they are called as customer relationship manager, growth specialist. So, a different title has been given by many organizations. There's a change to to the people, so they are seen as experts. We position them as experts. We position that they are trying to help the buyer and give a unique perspective on their challenges and give actionable insights so that we are able to take them into the next step of the customer journey. So this is very important that you develop your sales people into sales champion, right? Now, the third one, we are talking about the alignment of the sales and marketing team. This is very important with the changing business scenario as the roles of the sales and the marketing team is changing. It is very important they are aligned and they are working towards the same goal. This comes first in the case of the content. So when the content is prepared by the marketing team or the content library is prepared by the marketing team, they should make sure they are involving the sales people, they are taking their ideas and they are helping them make a presentation. The best thing would be to help the salespeople write a blog for your about the product. He can post that blog on the LinkedIn, right? And you'll see the kind of views that have been taken. One of my friends, he had put a blog on the customer complaints on the LinkedIn. He used to get around 1,600 views. But after posting that blogs, he got nearly 100 likes. And in that month, on that post, he got 45,000 views. And there were also some inquiries on his product. So you see the right content on the right platform will help you reach the right customer, right? So this is a very important thing. So this is what we are talking about. The next best thing is that you can have your sales people, make a content and you can make him have a live webinar. A live webinar of your target audience where he can pitch about the content, he can talk about solving the problems of the customers, and he can give actionable insights on how his company's product or solutions is going to help him solve the customer's problem. So at one go, he's able to meet a lot of people and he's going to share his expertise. He comes forward as a thought leader or an expert, and this is going to build the trust with the customer, and this is going to help you make a change, right? So as we look forward, B2B sales has changed, right? It is no longer as simple that, and we cannot have the liberty of waiting for the customers to come to ourselves. Very important that we become proactive and we share relevant content with the customers to address that need. And you have to work closely with your marketing department to develop the right content. So with this, you will be able to build a stronger and a trustworthy relationship with your buyer. And this is going to help you convert into sales. So this is what you say, that business relationship building is very much important to help you convert into the sale. I will just close my session with a wonderful example. I have a friend who owns a car sales room. So initially when the customer उसके कार के शोरूम में आता था, तो एक सेल्स पर्सन और सेल्स क्लार्क उसकी टेबल पे बैठा रहता था. जैसे ही कस्टमर अंदर आए वो उसके पास जाता था, उसको अपने डेस्क पे बिठाता था, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछता था कि आपको किस प्रकार की कार चाहिए. फिर वो उसे ऑप्शंस बताता था in terms of color, in terms of accessories that he will get, and then he used to give him a brochure. And also he used to say that if you pay an advance and if you are interested to buy this car, I can help you with a test drive in future. But today what is happening? Today there is a vast change. If you go to a car sales room, 60 to 70% the buyer has done an online research and he's aware of what he wants, right? So when he goes to the car sales room, what he wants to do is that he wants to experience that car, right? He wants to experience that car, he wants to sit in that car, he wants to touch it, he wants to feel it, and he wants to smell, and of course he wants to drive that car. So he's looking for a complete customer experience. And today in the new role, a salesperson has to give the buyer
that excellent buying experience. And if you are able to do that, I think you are going to win more deals in this changing scenario and build up good revenue for your business. So with this, I end my session on how we spoke about on the challenges, the change that has been taking place, how the buyer behavior has changed, what are the problems the buyer is seeing, what are the problems the salespeople is seeing, and we saw that this problem can be resolved, and there is a hope that we will all can create a better future for ourselves. So I thank you for the time given to me, and I request Mr. Prakash Batna to take the next session where he would be talking on the strategies, to grow your business consistently. Thank you. Thank you, Rekha ma'am, Yeah, thank you. for your valuable inputs. And you very rightly mentioned that a new B2B era has emerged, wherein there are challenges for the modern B2B sales team, and how to overcome modern sales challenges that is required in today's world. And if any organization, they apply the same, they can see the difference, how it can make to their business. And now I request Mr. Prakash Patna, founder, CEO of Highcell Consulting, to kindly take over. He has professional experience, includes, more than 26 years of experience. He's IIMA trained and he has coached sales professionals and entrepreneurs. So moving further, I request Mr. Bhatna to kindly take over. Great, thank you very much, Rimni. So just a small correction, मैं उतना old नहीं हूँ. It's only 15 years of work experience. so But sir, so that I was. think I got 26 plus years. So that's on a lighter note, but then hi all, a very warm good afternoon to each one of you, and thank you PhD and Madhuji and Rimnit for welcoming on us on board, and it's an honor and pleasure, privilege to be speaking on this particular platform. Today has been absolutely fantastic day. आज because I am a cricket lover, India जीत चुकी है, and man, what a way to win. And I'm sure जितने लोग भी इंडिया में हैं, कोई ना कोई क्रिकेट से अनछुआ नहीं होगा. So I'm very clear about it. So it's a happy moment for all of us. So on that note, let's start off our session. Rimnit, I think the chat is on, right? Because I would need the chat off and on. So that would be a great help. Great. So moving on to the next stage. So Rekha has pointed out the scenario that has changed. And I presume that most of you are into B2B selling. When I say B2B में institution आ जाता है, government आ जाता है, institution selling आ जाता है, right? So why Rekha has been mentioning solution. She has been harping on solution. Why in B2C में क्यों नहीं होता? Okay. The reason being B2B is always one-to-one. Longer customer cycle होती है, longer decision making होती है, जर्नी बहुत लंबी होती है, इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा होता है, रिस्क भी उतना बड़ा होता है. So when these elements come together, then you need to sell solution and not just a product, and that's precisely the reason how things have changed over a period of time. So Rekha has highlighted the way the world has changed or the way the business has changed. When we were mentioning about salespeople, we all are salespeople. Okay, जो भी product बेच रहे हैं, whether we are an entrepreneur, whether we are a business owner, at the end of the day we are selling our product. Okay, so salespeople combines everyone. So now starting off with the discussion where Rekha left is, ये तो हमें पता चल गया कि what is it that needs to be done, business कैसे change हुआ है, how things have changed and so on and so forth. But understanding itself doesn't mean anything to me if I am not able to create a success strategy. Right now, in the next 40-45 odd minutes, I will be taking you through few of the templates that I have created. मुझे बहुत डिफिकल्ट है ये पूरा एक 45 मिनट्स में करना, बट जितना हो सके उतना मैं जस्टिफाई करूंगा बिकॉज वी हैव ब्रॉडर सेशंस गोइंग ऑन. सो लेट मी रन थ्रू दिस. सो द फर्स्ट टेम्पलेट दैट आई एम टॉकिंग ऑफ, अगर आपको पूरे इसमें 2 या 3 चीज लेनी है,
ये मेरे पूरे प्रेजेंटेशन में, रेखा के पूरे प्रेजेंटेशन में, सो रेखा के जो 3 enablers which she has mentioned was one strong element that you all need to be taking in, and in my presentation I will be telling you what are the elements that you need to be taking in. So this is the first element. इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, इसको आप अपने डेस्कटॉप पे डाल दीजिएगा, इसको आप पिन कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स स्ट्रेटेजी पीस दैट अ B2B कंपनी शुड हैव एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. सो व्हाट इज इट दैट वी आर टॉकिंग ऑफ? सो ये मैंने पूरा सेल्स मॉडल कैनवस क्रिएट किया है, राइट? सो अगर आप देखोगे, सो देयर आर 9 ब्लॉक्स ऑफ इंपॉर्टेंस, 9 ब्लॉक्स, एंड दिस डिफाइंस योर एंटायर सेल्स स्ट्रेटेजी. द फर्स्ट ब्लॉक, कस्टमर नीड्स. जब तक आपको नहीं पता चलेगा सामने वाले को क्या चाहिए, व्हाट आर हिज नीड्स, व्हाट आर हिज पेन पॉइंट्स, व्हाट आर हिज चैलेंजेस, व्हाट इज प्रॉब्लम्स, you will never be able to sell a product. Once you understood this is the first block. Then you understand the customer types and persona. This is the customer types and persona. This is the second block. Needs तो मुझे पता चल गया बॉस, but बेचना किसको है? Who are the kind of people that I need to be selling in? Please understand, your product is not for everyone. कोई भी मुझे आके ये बोलता है प्रकाश मेरा तो प्रोडक्ट एक 4 साल के बच्चे से लेके एक 100 साल का बुजुर्ग भी ले सकता है मेरे से. If that is what your product is, then you are in the wrong business and you will never be able to sell. That never happens that way. Okay, you always need to define your customers. चलो मैंने define कर लिया, but what is my value proposition? How will I sell my product? Okay, you need to define your value proposition. Fourth, you need to understand your competitors. Space में कौन है मेरे? Okay, and then you need to understand the negotiations, objections, close. अगर आप देखोगे तो मैंने ये एक लाइन डाली है on the right hand side. अगर आप देखोगे तो एक ब्लू कलर की लाइन है. This is the boundary. So this is customer facing. Everything is customer facing. Okay. जो लेफ्ट साइड में है, this is internal, company facing. Customer facing and company facing दोनों उतना ही strong होना चाहिए to create a complete cohesive strategy. Okay. उसके बाद आती है what are the key resources internally that you have. Manpower है, पैसा है, product है, क्या है आपके पास which will help you to deliver your strategy or your product or your solution or your value. उसके बाद आती है key activities. What are the activities are you doing right now? Okay, to manage your entire ecosystem. आप शायद ऑटोमेशन करते होंगे, आप एक्टिविटीज में ट्रैवल करते होंगे, ईमेल कैंपेन करते होंगे, डिजिटल मार्केटिंग करते होंगे, CRM करते होंगे. I don't know. So what are the activities that you are doing currently? Next, if you can't measure, you can't control. I always say, मैंने 9 तारीख को HMC कॉन्फ्रेंस में भी यही बोली थी, if you can't measure, you can't control. So you need to measure your metrics. And last is, what is the cost structure that you are having in right now at this point of time? So ये पूरा सेल्स स्ट्रेटेजी है, मैंने एक पेज पर डाल दिया है मैंने. Now this is also a gap analysis. What you need to do is you need to give each of these block 5 points. Okay, on a scale of 1 to 5, where do you stand on each of this? So अगर 9 blocks है तो 45 पूरा रेटिंग है इसका. Okay, on a scale of 1 to 5 आप अपने बिजनेस को दे दीजिएगा हर ब्लॉक पे आप कहां पे खड़े होते हो, एंड आप खुद जान जाओगे कि कहां पे आप स्ट्रांग हो और कहां पे आप वीक हो. ओके, सो दिस इज द एंटायर स्ट्रेटेजी पीस दैट वी आर टॉकिंग ऑफ. स्ट्रेटेजी तो हमने बना लिया है, लेकिन आगे बढ़े कैसे? आगे बढ़ने के लिए एंटायर सेल्स प्रोसेस इज डिवाइडेड इन 9 बेसिक स्टेप्स. फर्स्ट, ऑलवेज रेज द बार. सेकेंड, prospecting, identify always your right customer. Third, nurture the leads. Fourth, उनकी दुख को समझो. एक बार मैंने लीड्स को देख लिया, उनको दुख को समझो, पेन को समझो. नानी के कमरे में ना मेरा बैग पड़ा होगा जिसमें मेरी कॉपी और सब पड़ा होगा. Can someone go on वो mute, ले आना please? जूट के बैग में. ओके बाय. Then you need to understand your objections and negotiations. Last, on the second stage is closure. You need to close the deal well, doing it well. Stage 3, understand your customer lifetime value. Stage 4, referral. And stage 5, measure. Always believe in one thing. You have to improve your CV. CV when I say credibility and visibility.
अगर आपका सर्विसेज सॉल्यूशन प्रोडक्ट क्रेडिबल है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, पीपल आर रेविंग अबाउट इट, एंड आप विजिबल हो, ऐसे नहीं कि आप साल में एक बार कम्युनिकेशन करते हो, ऐसा नहीं कि आप महीने में घंटों घंटों बात ही नहीं करते हो किसी कस्टमर से. इफ यू आर नॉट विजिबल, इफ यू आर नॉट क्रेडिबल, you will never get PO. When I say PO, you will lose possibilities and you will not get opportunities. बहुत important है. These two slides that I have shown, please pin करके रख लीजिएगा, because this is how your entire strategy will flow. So now moving on, the first thing again, when how does a mahout control an elephant? Okay, अगर आप देखोगे तो छोटी सी रस्सी बांध देता है एलिफेंट के पैर पे, अ जायंट एलिफेंट, राइट. माहौत तो कहीं पे भी, मतलब एक इंसान कहीं पे भी एलिफेंट के नजदीक भी नहीं आता है, एक पुश से ही विल जस्ट फ्लाई अवे, राइट. बट विथ अ स्मॉल रोप ही कैन कंट्रोल द एलिफेंट. व्हाई? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज नॉट द रोप, द रीजन इज द माइंडसेट, द रीजन इज द बिलीफ. ओके, सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ बिलीफ. जब हाथी बच्चा होता है तो उसको चेन से बांध दिया जाता है. ओके, एंड वो चेन को नुकीले दांत होते हैं. सो जब भी वो बेबी एलिफेंट ट्राइज टू रन अवे और ट्राइज टू ब्रेक द चेन, वो नुकीले दांत उसको चुभते रहते हैं, और इतना चुभता है, एलिफेंट में एक डर पैदा हो जाता है कि यार अभी मैं अगर इफ आई ट्राई टू रन अवे, आई विल हैव दैट पेन. और वो दिमाग में हमेशा वो लेके चलता है जब तक वो बड़ा होता है. Okay, so the elephant is held back not by puny rope but by its belief system. Are we not? In sales we are also limited by our belief. Okay, how? So what happens is, हम at the end of the day results देखते हैं. End of the day results देखते हैं. We don't see whether belief is actually there or not. Okay, अगर मान के चलिएगा कि कोई सेल्स का बंदा बोलता है आई एम नॉट गुड एट कॉलिंग और कोल्ड कॉलिंग, ओके, ये उसने बिलीफ बना लिया है मन में. अगर इस तरह का बिलीफ उसने मन में बना लिया है, दैट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन हिज एटीट्यूड. ओके, सो जब भी उसका बॉस उसको सेल्स का काम देगा, कोल्ड कॉलिंग का काम देगा, यार प्रकाश डेटाबेस अपने पास है नहीं, चल लीड्स जमा कर, व्हाट विल आई डू? आई विल स्टार्ट अवॉइडिंग. मेरा एटीट्यूड में शिफ्ट आना चालू हो जाएगा. मैं बोलूंगा सर मेरा वो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, प्रपोजल का काम है. आई विल स्टार्ट ऑलवेज स्टार्ट अवॉइडिंग. माय एटीट्यूड चेंजेस. व्हेन माय एटीट्यूड चेंजेस, इट रिजल्ट्स इन एक्शन. ओके, व्हेन आई से एक्शन, whenever I pick up the phone, I will not be convincing enough. मैं फोन उठाऊंगा जल्द से जल्द रखने के लिए. ओके, so what happens? I start believing that I'm not good at calling. Okay, that is resulting in my attitude and my actions. What will be the result? Now we all know by this example, he will never be able to convert the deal on phone. And the boss says कि boss results आया नहीं है, you are out of the organization. But it starts from his belief. The beautiful example that I'm talking of is beautifully explained in today. I don't know how many people have seen the match today, India ka, which has won. It is a significant, it's a moment in history. India first test match was one down and we have been destroyed pathetically. 36 all out has never is also a record, right? वहां से आना, सीरीज जीतना, and Gaba, which is a stadium wherein Australia has never won, never lost a match in the last 31 years. Defeating Australia at Gaba after 31 years, it's quite significant. What do you think has changed? We all seen the result, right? 2 दिन बाद जब मैं बात करूंगा तो मेरा एक स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा कि इंडिया has won this match. What has changed? Anyone, can you just put it in the chat? What has changed? What has happened? The request Why we to have won? kindly enable the chat box. It is disabled. Yeah, can you please, Rimnit, enable the chat box, please? That would be great help. Is it happen? Has it happened? Yes, I am doing it. Yeah, thank you. Is it done? So please type Yes, what sir, it has, is done. yeah, so what has happened? What has changed?
Absolutely, Dimple. Any other? Any other? What has happened? Okay, so Dimple is very right. Dimple, you are absolutely right. Yes, yes. Approach. Madan is saying, come on, absolutely. Please keep typing because I don't want to be a teacher. It's not a monologue session. We need to interact. I need to know your thought process. Only then we will benefit out of this entire program. And don't worry, we'll complete in time. Great. So, approach, Madan, what you have mentioned is the attitude and the action. Agar aap dekhoge, Dimple is absolutely, Dimple, what she has mentioned is absolutely perfect. The belief, मैदान में उतरने से पहले ही, okay, हर एक प्लेयर के दिमाग में ये था कि बॉस जीतने का जज्बा, एंड माइंड में ही उन लोगों ने बना लिया था कि आज का मैच हम जीत जाएंगे. दे हैव स्टार्टेड ऑन द ग्राउंड ऑन द पिच फर्स्ट बॉल से. अगर आप देखोगे तो इट वाज अ बिलीफ इन देयर थॉट प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू विन दिस. व्हाट हैज हैपेंड? बिलीव्स के साथ साथ उनका एटीट्यूड चेंज आया. जब आप बिलीव करते हैं ना कि मैं कर देखूंगा ये, तब उनका एटीट्यूड आप देखो एकदम पॉजिटिव था. पीपल वर प्लेइंग द स्ट्रोक्स फ्रीली. That resulted in actions. The scoreboard got ticking, and the result we won. हम ये बोलते कि ये ज्ञान है, belief and all, but then believe me, people, the entire sales happens on belief. This is one thing that makes or breaks your entire result. So most of the times ये मैट्रिक्स को हम उल्टा करते हैं. In my consulting assignments, what I tell the small medium companies and other CEOs and all, I do उल्टा. I tell रिजल्ट क्या अचीव करना चाहते हो आप, उस रिजल्ट के लिए आपको क्या एक्शंस लेनी जरूरी है, उस एक्शन को निभाने के लिए क्या एटीट्यूड होने चाहिए आपके पास, और वो एटीट्यूड लेके आने के लिए आपका संकल्प, आपका बिलीफ, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए. दिस इज हाउ आई डू. once we do that, results will happen. Absolutely sure, there is no two ways about it. So that is our first. चलो यार, मैंने बिलीफ बन गया, मेरा माइंडसेट बन गया, मैं बहुत पॉजिटिव हूं, अभी तो मैं जाना है. ठीक है, सेल्समैन पर्सपेक्टिव से आप देखिएगा, अगर उसका बिलीफ ये है कि मेरी कंपनी अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है, या मेरे कंपनी का आफ्टर सेल्स सर्विस बुरा है, आपको लगता है कि वो कस्टमर के पास जाके कभी ढंग से डील कर पाएगा? नेवर. ओके, सो वंस आई एम डन विद माय बिलीफ माइंडसेट, आई कम केयर मैं किसको सेलेक्ट करूं. मेरे प्रोडक्ट तो मैं सबको बेच नहीं सकता हूं मैं, राइट? I need to be very specific, very focused on the kind of customers that I need to be selecting in. Okay, this is just one of the simple example that I have done. I have a complete, इसका एक दिन का सेशन होता है कि how to select your entire buyer or your customer. Okay, you need to have your target profile in place. नहीं तो क्या होगा ना, आपका सेल्स, आपकी टीम, आपकी मार्केटिंग की भी टीम will go all over the place and they will chase a wrong customer, and more failures will result in and revenues will never come. So क्या होता है buyer persona? It is typically identifying your persona and making them as close as possible to your target profile. उसका बैकग्राउंड होता है, डेमोग्राफिक्स होता है, उसको क्या अच्छा लगता है, कौन से ब्रांड्स पहनता है. जितना ज्यादा डिटेलिंग आपको पता है, उतनी ज्यादा फायदा आपको होगा. ओके, सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई योर टारगेट प्रोफाइल. Create a complete module out of it and hand it over to your marketing and your sales team. Now, चलो, मैंने नंबर्स तो बना लिया, मैंने मैंने प्रोफाइलिंग तो कर, मैंने माइंडसेट बना लिया, मैंने प्रोफाइलिंग भी कर लिया है मैंने. ठीक है, नाउ आई नीड टू बी क्लियर कितने नंबर्स मुझे चाहिए टू एंश्योर दैट आई नीड टू बी कॉन्टैक्टिंग दिस पर्टिकुलर पीपल. If I don't know my numbers, I am a numbers person. अगर मुझे numbers नहीं पता तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा. Okay, in sales there is a very beautiful concept. I don't know how many people are aware of this concept called sales velocity. Are you guys aware of sales velocity? Please type yes in the chat box. If no, then type no. Superb, 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 superb. So whoever has typed yes, are they able to use it? Type yes for people who have already know this concept. Okay, so what I'm trying to say is sales का पूरा सारांश अगर किसी को भी चाहिए, ये 4 मेट्रिक्स में ही है.
अगर ये 4 मैट्रिक्स को किसी ने भी मास्टर कर लिया, it can be an entrepreneur, it can be B2B, it can be B2C, it can be any business. You have cracked the code of sales and how to sell it effectively. Okay, so what is it that I'm talking of? ये 4 ही लीवर्स है. द नंबर ऑफ लीड्स, अगर आप देखोगे नंबर ऑफ लीड्स, एवरेज डील साइज, ये एवरेज डील साइज है, कन्वर्शन रेट, ये कन्वर्शन रेट है, एंड टाइम टेकन टू क्लोज द डील. सेल्स वेलोसिटी इज नथिंग बट रन रेट. मुझे मेरी टारगेट अचीव करने के लिए मंथ ऑन मंथ कितनी रन रेट चाहिए. So I was the vice president for a company called Sodexo, which is the leader in the catering, food catering services. Okay, institutional sales. So I used to sell my product into schools and education segment. I used to deal only with CEOs and trustees who used to take the decision because 5 crore की deal होती थी मेरी. Okay. Now जब मैं अपने sales team को दौड़ा था, so these were the metrics that I used to drive in. नंबर ऑफ लीड्स मतलब क्वालिफाइड लीड्स, कितने लोग क्वालिफाई हुए, हु हैव शोन इंटरेस्ट. मेरी एवरेज डील साइज 1 या 2 करोड़ की होती थी. ओके, सो लेट्स से अगर मेरी 10 लीड्स है, एवरेज डील साइज 1 करोड़ की है. कन्वर्शन रेट मतलब जब मैंने लीड्स ओपन अप किया है एंड क्लोज किया है फाइनली विद अग्रीमेंट साइंड ऑफ, दैट इज माय कन्वर्शन रेट. ओके, एंड मेरी एक एक डील 2-2 महीने का टाइम लेता था. either it minimum on an average it used to take me 60 to 90 days to close one deal. राइट अगर मैंने टारगेट एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज रखा है, ओके, माय रन रेट हैज टू मैच अप टू दैट एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज एंड दीस आर द ओनली 4 वेरिएबल्स. राइट, once you master these 4 variables, the 80% of your sales job is done. Okay, so please master the sales velocity. Now चलो नंबर्स मुझे पता चल गए, मुझे अभी पता है कि कितने लोगों को मुझे टारगेट करना है, मुझे अपॉर्चुनिटीज कितने क्रिएट करने हैं, बट मैं कैसे करूं. मैं राइट नाउ इफ आई एम स्टार्टिंग अप, इफ आई एम B2B और B2C at any given point of time, guys, can you tell me how many leads right now at this point or opportunities you have right now at this point of time? Please type the numbers. Please type the numbers. How many opportunities in your business do you have right now? So I would really like to interact if that's possible. Sorry, you need to tell me your name. I'm Dimple Verma. Dimple, you need to hold, please. We will have our, because नहीं तो ना हम रुक जाएंगे, मतलब we will complete this. I completely Yeah? agree. Fine. Yeah. Thank you very much, Dimple, for Ma'am, you can understanding. interact during our interaction time after sir's presentation is over, right? Yeah, yeah, Right, absolutely. right. Or else I'll So I take will it have offline. Q&A. Yes, Sure. yes, no problem. Yeah. So how many leads or how many opportunities do you have at this point of time? Please go on, go on. Leads I'm talking of. Go on. Akshima is saying 2, Neeraj is saying 5 to 6. Who else? बस अक्षिम और नीरज ही बिजनेस कर रहे. What about others? Dimple 150, absolutely. Ajay 18. That's it. That's great. That's great. Let's keep coming up. 56, 200. Great. Absolutely fantastic. So 10. Prahalad is saying 10. So team, when we are talking, Sumit is saying 20. So team, what is it that I'm asking? When I'm trying to say, मैं leads पूछा था आप लोगों को, तो 10 on an average 2 थे किसी के, अक्षिमा के थे शायद, एंड किसी के 150 से 200 थे. So that is the range that we are talking about. But do you really think that's the only range that we can ever create at any given point of time? Okay, I don't think so. Because if we have this framework in place, FROG framework, that's what we call friends, relatives, organizations, geography. These are warm market that we are talking about. How many friends each one of us know? Minimum 10, minimum 20, minimum 50, minimum 30, I don't know. But 10 तो होंगे यार. उनके कितने होंगे? 10. So 20 आपका captive audience है. Relatives कितने हैं? यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसका कोई relatives नहीं होगा, right? Organizations, definitely people would have worked with some organizations or they have been selling to few of the organizations, right? Geography, we are talking of Punjab. Is that the boundary? No, the world is your playground. Okay, कहीं ना कहीं कोई ना कोई connections मिल जाएगा. अगर आपने ये पूरा लिस्ट इस फ्रॉग फ्रेमवर्क से निकाला, बिलीव मी, किसी को भी 500 से कम, आई एम टॉकिंग ऑफ लीड्स, नॉट अपॉर्चुनिटीज, आपने उनको अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है.
किसी को भी 500 से कम नहीं आएगा. दैट इज माय एश्योरेंस टू यू. यू कैन टेक दिस एक्सरसाइज. ओके, मैंने चलो फ्रॉग फ्रेमवर्क्स मैंने लीड्स जनरेट कर लिया. आई हैव आल्सो क्रिएटेड माय एंटायर प्रोस्पेक्ट लिस्ट. नाउ all prospects cannot be the same. Akshima, Dimple, Neeraj, Prakash, Ajay cannot be the same. If these are the 5 or 10 people who are my prospects, I need to level them. मैं सबको एक तरीके से बात नहीं करूंगा. सबसे नीचे बॉटम ऑफ द पिरामिड आर दोस काइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट्स जिसका मुझे सिर्फ नाम पता है. ओके, मुझे सिर्फ पता है रिमनीत, दैट्स इट. आई डोंट नो हर मोबाइल नंबर, आई डोंट नो ईमेल आईडी, आई डोंट नो व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर. मुझे कुछ भी नहीं पता अपार्ट फ्रॉम नाम. ओके, आई विल ट्राई टू कीप, आई नो कि वो कहीं पे कुछ तो काम करती है, दैट्स इट. ओके, आई विल कीप हर इन लेवल 1. लेवल 2 विल बी ऑल दोस काइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट्स जिसके बारे में मुझे सब कुछ पता है. Who are the people, which company is she working for, email IDs, phone numbers, blah blah blah, and पूरा list. Level 3, list of people with complete records. कौन से competitor से, कौन सा solution से, कौन सा product से, कब उनका tender change होता है, कब उनका RFP निकलता है, everything. Level 4 is highly targeted list. Okay, these are the list of clients which only a CEO or a key account manager or a sales head or a VP sales will handle it. Level 5, हॉट इनबाउंड लीड्स. जो लीड्स मुझे अंदर की तरफ आती है कॉल करके, हे प्रकाश, मैंने आपकी कंपनी के बारे में बहुत सुना है, कैन यू कम ओवर एंड हैव अ डिस्कशन फॉर आवर सेल्स, फॉर आवर प्रोडक्ट और सॉल्यूशन, राइट? दीस आर द लीड्स दैट हैव बीन कैप्चर्ड ऑन माय वेबसाइट, ऑन फोन, रेफरेंसेस, रेफरल्स, एवरीथिंग विल कम ऑन हॉट इनबाउंड लीड्स. एंड लेवल 6 इज योर टॉप ऑफ द पिरामिड. व्हेन आई से टॉप ऑफ द पिरामिड, ये वो क्लाइंट्स होते हैं जिनको आग लगी रहती है, आज का आज सॉल्यूशन चाहिए. प्रकाश, मेरा वेंडर भाग गया है. आई हैव फेस दिस इन सोडेक्सो. आई हैव गॉट वन अकाउंट, 3 करोड़ का अकाउंट था सालाना वो. उसका वेंडर वाज अ लोकल वेंडर. वो इमीडिएटली निकल चुका था बिकॉज ही वेंट बैंकरप्ट. उसके पास पैसे नहीं थे. एंड दिस इज वाज 1800 स्टूडेंट्स का मार्केट था, ये स्कूल का रेजिडेंशियल, राइट? नाउ ये भाग गया था तो इसके साथ मैं टच में था. मुझे लिटरली 6 महीना इसके साथ मैं टच में था. मुझे अकाउंट चाहिए था, बट आई वाज जस्ट नर्चरिंग दिस लीड. आई विल टॉक अबाउट इट. आई वाज नर्चरिंग, मैं उसको इन्फॉर्मेशन देता था, ये करता था. जब उसका बंदा भाग गया, आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु पिक्ड अप द कॉल एंड ही पिक्ड अप द फोन एंड कॉल्ड मी. प्रकाश यार, ये सिचुएशन आई है, कैन यू टर्न अराउंड, पुट अप अ कंप्लीट केटरिंग यूनिट इन द नेक्स्ट 1 वीक. एट सोडेक्सो वी डोंट डू इट एक्चुअली. ओके, सो एक वीक में तो नहीं करा मैंने, बट 14 दिन में मैंने करा था. December 23 वी स्टार्टेड ऑफ, Jan फर्स्ट वीक वी वर अप एंड रनिंग इन द किचन लाइव. दैट वाज द, दिस आर द काइंड ऑफ कस्टमर्स दैट, ये विंडफॉल है, कब आते हैं पता नहीं चलता आपको, बट यू नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ इट. ओके, नाउ चलो, मैंने कर तो लिया. मैंने लीड्स को, मैंने प्रोस्पेक्टिंग भी बना लिया, मैंने फ्रॉग फ्रेमवर्क लगा लिया, मैंने लीड्स क्रिएट कर दिया, मैंने प्रोस्पेक्ट्स को बकेट भी कर दिया पिरामिड के हिसाब से. डू यू थिंक B2B में फर्स्ट इंस्टेंस में ही प्यार हो जाता है, या फर्स्ट इंस्टेंस में ही लव हो जाता है, या फर्स्ट इंस्टेंस में डील क्लोज हो जाता है, वेन से प्यार हो जाता है, डील क्लोज हो जाता है? यस और नो, टाइप यस इन द चैट बॉक्स. नो, whoever feels no. Prahlad is saying no, Ajay is saying no, Sumit is, what else? Rest all are yes. If rest all are yes, then let me say Ajay and Prahlad is right. In B2B, no deal happens in one day or first instance. Okay, you need to develop, you need to cultivate, you need to nurture. जैसा एक फार्मर होता है, जब अपना फसल उगाता है तो उसको खत देता है, पानी देता है, 6 महीना रुकता है फसल आने के लिए, राइट? उसके बाद ही रीप्स द बेनिफिट आउट ऑफ इट. दैट्स एक्जैक्टली हाउ यू नीड टू बी डूइंग इट. ओके, आज अगर मैं एक स्टेडियम में खड़ा हूं, मैं एक क्रिकेट के स्टेडियम में खड़ा हूं, मैं सेंटर ऑफ द स्टेडियम में एक डायस है और मुझे एक माइक दे दिया गया है. आई एम हेड ऑफ द कंपनी एंड पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है 50,000 लोगों से. अगर मैं बोलूं मेरी कंपनी लैपटॉप बेचती है, ओके, किसी को भी रिक्वायरमेंट है तो प्लीज हाथ खड़ा करना. स्टेडियम, आई एम टॉकिंग ऑफ स्टेडियम, विजुअलाइज इट इन द सेंटर ऑफ द स्टेडियम. Any given point of time, and this is true, this statistics that has been proved, B2B में any given point of time only 3% people are ready to buy instantly. These are those customers जिनको आग लगी रहती है.
only 3%. Okay, 7% are open to buying, कब पता नहीं, and 30% are not interested right now. Interested but will not buy right now. And most of the time, salespeople don't target the 30% category which are interested. And सब लोग वो 3% के लिए ही मराते रहते हैं पूरी, मतलब they keep on fighting amongst themselves only for the 3% market. And that is the challenge which all the B2B segment is going through nowadays. Okay, if there is also very interesting statistics, the progression of a sale. It is said, एक बार प्रकाश ने फोन किया, आई एम अ सेल्स पर्सन, इफ आई एम कॉलिंग नीरज और अजय, अगर उन्होंने मुझे ना बोल दिया, 43% ऑफ द सेल्स पीपल हैव गिवन अप ऑलरेडी एक कॉन्टैक्ट के बाद. Statistics show 68% of the sales people give up after contact 2, 80% after contact 3. 3 से ज्यादा में 80% of the people move out. Okay, and जो उसके आगे रुक जाते हैं, they reap the benefits and they are able to close the deal. It's said that almost it takes 10 to 15 contacts for a client or a lead to get positive, to get warm up to you. Okay, lead nurturing ये नहीं होता है कि आप उसको एनॉय कर दो. लीड नर्चरिंग का मतलब ये है आप उसको सही इंफॉर्मेशन दो, जैसा रेखा ने बताया था, आप उसको इंफॉर्मेशन हर स्टेज पे देते रहो, उसको जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन चाहिए, सो दैट यू आर देयर एट द टॉप ऑफ द माइंड एंड नॉट एज एन अनॉयंस. ओके, सो चलो मैंने फर्स्ट 3 स्टेजेस कंप्लीट कर लिया. सेल के पहले मैंने उसको नर्चर भी कर लिया. नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द कस्टमर. If I don't understand the pain of the customer, how will I even move forward? मैं solution क्या दूंगा? As a company, as an entrepreneur, as a business owner, as a VP, as a sales head, if you don't know what your customer pain points are, how will I even serve the solution? अगर एक डॉक्टर को नहीं पता कि क्या दर्द हो रहा है, दवा क्या देगा वो? Right? So most of the time, what happens is, if you see this entire chart on the left hand side, 1 to 5 और 6 तक सेल्स नहीं होता है. कस्टमर को पेन है लेकिन he will not come through. I will take a simple beautiful example. आज मेरा टूथ हो रहा है, एग्जांपल, दांत में दर्द है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूं मैं, बट मैं कब जाऊंगा? अगर मुझे हल्का सा दर्द है, आई विल से कि ठीक है यार, इट्स ओके, कुछ होगा, मैं I can stay with it. I will not go to the doctor. I am okay with it. So that is stage 1 and 2. Okay. Stage 3 and 4 थोड़ा पेन ज्यादा होना चालू हो गया, वो पेन मुझे थोड़ा तकलीफ दे रहा है, लेकिन कैन आई लिव विथ इट? यस, एब्सोल्युटली, मुझे कोई टेंशन नहीं, मतलब अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा मैं, ठीक है, थोड़ा बहुत है. स्टेज 3 and 4 में पेन थोड़ा बढ़ना चालू हो गया. ओके, बट स्टिल मैं इतना ब्रेव हूं, मुझे डॉक्टर के पास जाना नहीं है, मैं 1-2 दिन और सह लूंगा पेन. Okay, that is stage number 5 and 6. And यहां से मेरा पेन इतना बढ़ना चालू हो जाता है रूट कैनालिंग का, कि बॉस बिना रूट कैनालिंग किए ये पेन जाने वाला है नहीं, बिकॉज इट इज स्टार्टेड इम्पैक्टिंग माय डे टू डे लाइफस्टाइल. मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूं, मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूं, मैं सो नहीं पा रहा हूं, मैं आई एम नॉट एबल टू लीड ए नॉर्मल लाइफस्टाइल. नाउ सपोज इफ अ डॉक्टर कम्स एंड से एट स्टेज 1 and 2 कि प्रकाश थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं तुझे दवाई देता हूं, ले लोगे? मैं कभी नहीं लूंगा मैं. एंड सेल्स के बंदे या कंपनीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे पिच देयर सॉल्यूशन इन स्टेज 1 to 5 व्हेन देयर इज नो पेन एंड द कस्टमर इज ओके. ओके, यहां पे 6 to 10 में जो पिच करता है सेल्स का बंदा या कंपनी, दे आर द पीपल हु विन द डील्स. एंड दिस, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे मिलेगी मुझे कि इसको पेन कहां पे हो रहा है और कौन से स्टेज पे है? दिस विल हैपन ओनली when this particular gentleman asks the right questions. Okay, and that asking the right question, there's a beautiful framework which is called SPIN. With most of my consulting assignments, I inculcate this SPIN framework. Very beautiful, very impactful, very effective. Okay, what does SPIN say? SPIN gives me 4 parameters. Situation में उससे सवाल पूछूं, जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूं,
तो डॉक्टर चालू नहीं हो जाता कि आई एम MBBS फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आई एम द नंबर 1 हार्ट सर्जन इन इंडिया, मेरे पास इतने क्लाइंट्स आ गए हैं, मेरे पास इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आके चेक करा. नेवर ही टॉक्स दैट. I don't know if anyone of you have experienced that, but I have never experienced that in my life. What will he start with? He will start with situation questions. Okay. Prakash, how you are feeling? क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? कब से पेन शुरू हुआ है? क्या लिया है आपने? So he will try to understand your situation. He will ask questions which are related to your situation to get the background. Then he will come to the problem questions. क्या तकलीफ हो रही है आपको? कब से हो रही है? ये प्रॉब्लम हो रहा है, कब से हो रहा है? इससे क्या डिफिकल्टीज हो रही है आपको? किस तरह की दवा लिया है? कितना सीवियर है प्रॉब्लम? ओके, देन ही स्टार्ट्स अनकवरिंग माय चैलेंजेस. ये प्रॉब्लम दांत दुख रहा है, इससे आपका क्या चैलेंजेस हुआ है? आपका लाइफस्टाइल, आप सो नहीं पा रहे हो, आप खाने, सो ही इज ट्राइंग टू सी द इंपैक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम कि कितना बड़ा है. अगर इंपैक्ट बहुत ही बड़ा है तो मतलब नीड बहुत इंपॉर्टेंट है, अब भी का अब भी इसको बेचना है. अगर बोल रहा है कि इंपैक्ट ज्यादा है नहीं, ठीक है यार, मतलब प्रकाश, योर सोल्यूशन इज ग्रेट, माय प्रॉब्लम्स आर देयर, बट अभी मुझे ना फूड का मेरा लोकल सप्लायर कर रहा है, मुझे कोई ज्यादा बड़ा टेंशन नहीं है, आई कैन लिव विद दिस पर्टिकुलर गाय. ओके, आई एम ओके. सो द इम्पैक्ट इज नॉट ह्यूज, बट if the impact is huge, the kits are not coming in, your services are not up to the mark, and it is impacting your reputation in the market, that means the impact is huge, boss. And then need payoff, I will start asking questions, the kind of solutions that need to be given in. And at the end of the session, doctors, after examining, they will give you the medicine. That is exactly how a salesperson or a business owner need to behave like a doctor when he is talking to a customer. Zyada suno, कम बोलो. ओके, एंड व्हेन आई से पिन, सिचुएशन क्वेश्चंस कभी नहीं ज्यादा पूछना चाहिए. द रीजन बीइंग, द सेल्स पर्सन शुड नो, डू हिज रिसर्च वेल इन एडवांस, एंड ही शुड फोकस ऑन प्रॉब्लम, implication, need, payoff. PIN. These are the 3 areas to design a solution he should focus on. So moving on, in the aspect of the time, these are some situation questions, spin questions that are there, but I will take it in the end if at all there is time. नाउ मैंने नीड समझ लिया, मैंने सोल्यूशन देना है, मुझे सोल्यूशन देना है कस्टमर को. आई हैव अंडरस्टूड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट, आई हैव डन दिस एंटायर रिसर्च, राइट. जब मैं प्रेजेंटेशन के लिए जाता हूं कस्टमर के पास इन B2B, आई हैव ओनली 60 मिनट्स विथ मी. एक क्लाइंट देता है 60 मिनट्स, फर्स्ट मीटिंग या सेकंड मीटिंग, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट. ये 60 मीटिंग्स में you need to tell a story so powerful that he falls flat for your solution, and he should say, wow, this is the solution that I had been looking for. How that will happen? Only when you ask the right questions. Okay, and the right questions can be asked only when you select your customers right, and selecting a right customer is only when you can do your prospecting well. So everything is interlinked. ये मैं कहीं पे भी linkage तोड़ नहीं रहा हूं, everything comes in a flow, right? ये 60 मिनट्स में ना कस्टमर को बहुत सारे दिक्कतें आती है, उसको ऑब्जेक्शंस होता है कि यार प्राइस बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये कस्टमर सर्विस कैसा होगा. सो जब आप प्रेजेंटेशन करते हो, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस उसका स्टार्ट में होता है कस्टमर का. ही विल नॉट बाय योर प्रोडक्ट, बट in that 60 minutes you need to keep on reducing the resistance by addressing the objections in the sales pitch itself. Okay, let's say अगर आपको पता है कोई भी इंडस्ट्री में ना 4 या 5 से ज्यादा ऑब्जेक्शंस आते ही नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्राइस वाली ऑब्जेक्शन. Okay, so let's say if you know that the customer is going to ask about the price, कि प्राइस आपका ज्यादा है, integrate in your sales pitch, जो पूछने से पहले आप बताओ कि सर many of our customers have been telling that our price is quite high, but believe me sir, अगर over a period of 5 साल अगर देखते हैं ना, हमारा जो solution हमने जो दिया है ना, actually that is saving him billions of dollars rather than the kind of investment that he is doing it. वो पूछने से पहले you need to put that objection into your sales pitch and you need to reduce the tension. Okay, objections तो चलो यार मैंने sales pitch भी दे दिया, मैंने manage कर लिया. नाउ आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेगोशिएशन, जहां पे आधे लोग खत्म हो जाते हैं. ओके, सो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट दिस ब्लाइंड स्टैंड्स फॉर? किसी को आइडिया है? सो दीज आर द टाइप ऑफ कस्टमर्स दैट वी आर टॉकिंग ऑफ. नेगोशिएशन जब भी करने जाते हैं, नेगोशिएशन एक बैटलफील्ड है. अगर आपको लगता है कि आई कैन गो एंड सिट एंड विंग इट, मैं जस्ट बैठ के कुछ भी बोल दूं,
तो इट नेवर हैपेंस इन B2B. B2B सेल्स नेगोशिएशन इज द मोस्ट टफेस्ट. एंड मैं 2 दिन को पूरा सेशन लेता हूं मैं, सो पूरा नेगोशिएशन पे, wherein I take the entire process. But in short, what I want to say is, negotiation करने से negotiations करने से पहले always go prepared. Okay, always understand negotiation में 5 तरीके का लोग होते हैं, 5 तरीके का. Okay, I call, मेरा ये एक्रोनिम है, I call them blind. Don't get blinded. Okay, B for blockers. B2B है, आपको पता भी नहीं होगा, बहुत सारे लोग होते हैं, आप शायद प्रकाश से बात करते होंगे, लेकिन मेरे पीछे मेरे ऑर्गेनाइजेशंस में जो आपको दिखता नहीं होगा, दोस्त पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा डील ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, हमेशा. ओके, L फॉर लाइक. कुछ लोग होते हैं जो आपकी कंपनी, आपके सॉल्यूशन, आपके सर्विस को लाइक करते हैं, बहुत लाइक करते हैं कि यार ओयो अच्छा है, जोमैटो अच्छा है, स्विगी अच्छा है. दे माइट नॉट बी इन द फोरफ्रंट, बट दे विल कीप ऑन लाइकिंग यू. ओके, तीसरा होता है इन्फ्लुएंसर. ओके, you need to understand who are the influencers in the entire ecosystem, and these are the people who can swing your deal this way or that way. Okay, चौथा कैटेगरी के लोग होते हैं न्यूट्रल. ये न्यूट्रल है, मेरा बॉस बोलेगा ये सूरज ईस्ट से आता है तो सूरज ईस्ट से आता है, मेरा बॉस बोले वेस्ट से आता है तो वेस्ट से आता है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी गद्दी बचानी है इधर. ओके, फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज डिसीजन मेकर. इन दिस एंटायर सीरीज you need to be like or neutral. आप उनकी चिंता भी ना करो. Even if you don't identify them, don't worry. But you need to identify your bid. Bid stands for blockers. आपको पता होना चाहिए who are the people who will play spoil sport, who are the influencers and who are the decision makers. अगर ये तीनों के बिना आप negotiation में गए, you will never come out successful. That is my assurance to you. Okay. So negotiating better. How many of you know Batna, Zopa, and WAP? Please type yes in the chat box. Would love to hear some comments. Please type yes if you know Batna, Zopa, and WAP in negotiation. Okay. Anyone else? Okay. Satish no. Mandeep no. Neeraj no. Okay. Okay. नो, जगत नो. ओके, सो नेगोशिएशन मैंने पूरा 2 स्लाइड में मैंने खत्म किया है, बिकॉज दैट इज द क्रक्स ऑफ नेगोशिएशन. बाटना इज नथिंग बट योर बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स. अगर आप नेगोशिएशन में उतरे बिना कोई ऑल्टरनेटिव्स के, दैट मीन्स योर बाटना इज वेरी वीक. एंड जिसका बाटना वीक होता है वो नेगोशिएशन कभी नहीं जीतता. नेवर एवर ही विंस द नेगोशिएशन. प्लीज अंडरस्टैंड, नेगोशिएशन का एक उसूल है, जिसके पास बाटना स्ट्रॉन्ग है, ऑल्टरनेटिव, व्हेन आई से बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, जिसका ऑल्टरनेटिव सबसे स्ट्रॉन्ग है, ही विंस द मैच. इट्स एज सिंपल एज दैट. ऑल्टरनेटिव्स में सबसे ज्यादा, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट ऑफ नेगोशिएशन, जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है सामने वाले के बारे में, ही विंस द नेगोशिएशन. अगर मुझे कस्टमर का पूरा इन एंड आउट पता है, I will win the negotiation. I can move around any which ways. Okay. So this is a beautiful slide. ये सेलर है, सेलर का डिजायर्ड प्राइस है, मैं बेचने वाला हूं. मैं अगर मनदीप को बेच रहा हूं, मैं, ठीक है, मैं अगर मनदीप को बेच रहा हूं, मुझे चाहिए 10,000 रुपया, और मुझे बॉस ने बोला है कि प्रकाश कुछ भी हो जाए 6,000 के नीचे नहीं जाना. ठीक है, हो गया. मनदीप बोलता है मुझे कोई भी अगर 5,000 में देता है तो मैं ले लूंगा ये प्रोडक्ट, और ज्यादा से ज्यादा मैं 8,000 तक जाऊंगा, मैं इससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है. राइट नाउ 10,000 में तो बिकेगा नहीं, 6,000 के नीचे बेचूंगा नहीं मैं. तो वी कम टू अ नॉर्मल एक अरेंजमेंट में आ जाता है. ठीक है यार, ना तेरा ना मेरा, चलो 7,000 में बेचते हैं मनदीप. ओके, दैट इज नथिंग बट जोन ऑफ पॉसिबल अग्रीमेंट. हमेशा negotiation never happens on the highest price or on the lowest price unless until you are desperate. And desperation तब आती है जब आपके पास इंफॉर्मेशन कम हो. इंफॉर्मेशन कम तब होती है जब आपका प्रिपरेशन वीक हो, और प्रिपरेशन वीक तब होती है जब आपने एफर्ट्स नहीं डाला हो.
So always go with preparation, 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 and that is the zone of possible agreement जहाँ पे होती है deal, okay? And alternatives, you need to have your strong alternatives. अगर नहीं है तो develop करो. And the next is always have your win matrix in place. Win is nothing but want, intent, need. मुझे 100 रुपए में चाहिए, लेकिन 50 रुपए में मैं सेटल हो जाऊंगा, 30 के नीचे तो मैं नहीं जाऊंगा. ये 3 प्राइस पॉइंट्स आपके नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी में होने चाहिए. That's it, simple. Always have this. This is a simple negotiation framework. Always assess your alternatives. Calculate your reservation value. मतलब एक प्राइस के नीचे आप नहीं जाओगे. ओके, सेम उसी तरह कस्टमर के भी बांटना. ऑल्टरनेटिव्स आप आइडेंटिफाई करो कि कितने सप्लायर्स है, कितना स्ट्रांग है वो सप्लायर. अगर वो पार्टनर ने उसके साथ नहीं, कस्टमर ने उसके साथ नहीं किया तो उसका ऑल्टरनेटिव्स क्या है. मैं अकेला ही ऑल्टरनेटिव है कि उसके पास और कुछ ऑप्शंस है. उसका रिजर्वेशन प्राइस जानो. कस्टमर्स बता देते हैं मेरे बजट इतना है. ओके, जोपा फ्रेम करो कि ये रेंज में आ जाएगा तो मैं ले लूंगा डील, एंड क्लोज द डील. दिस इज द सिंपल फ्रेमवर्क दैट happens in a negotiation. Now, if you do 1 to 5 steps that I have mentioned in one logical sequence and in a flow, then your closure, कोई भी आपको क्लोजर से नहीं दूर कर सकता. मतलब things will close, but everything is a process. Sales is a process. जो आप इनपुट डालोगे आउटपुट आपको वो मिलेगा. आप अच्छा इनपुट डालोगे, मेहनत करोगे, आउटपुट भी आपको अच्छा मिलेगा. ओके, so this is what the entire closure steps are. Now, have I completed my task only here? No. Actual journey शुरू होती है इसके बाद. In sales or in because I have also been a owner of founder and owner of 2 companies, one online restaurant company and one education company, along with high sales. So मुझे पता है कि बॉस मेरा डील क्लोज होने तक ही नहीं, उसके बाद मेरी एक्चुअल जर्नी कस्टमर के साथ शुरू होती है. एंड आई नीड टू नो कि एक कस्टमर से मेरा लाइफ टाइम वैल्यू कितना आएगा. हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? अगर लेट्स से मैं डोमिनोज की बात कर रहा हूँ, डोमिनोज पिज्जा की, उस दिन भी मैंने वही दिया था डोमिनोज पिज्जा. अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू 500 रुपए है, परचेजिंग फ्रीक्वेंसी मंथली एक बार लेता हूं मैं, एंड मैं 1 साल रहूंगा एज अ कस्टमर ऑफ डोमिनोज, तो 12 इंटू 1 इंटू 500, तो 6,000 रुपए का मेरा वैल्यू है. इस कस्टमर से मुझे 6,000 मिलेंगे. अगर ये कैलकुलेशन मुझे नहीं पता, देन आई एम डूम्ड. ओके, and always ensure that your customer lifetime value is greater than your customer acquisition cost. आप सब लोग जानते हो कि आप मार्केटिंग करते हो, कस्टमर को लेके आने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हो. अगर मैंने 6,000 रुपए, अगर मैंने 7,000 रुपए खर्चा किया डोमिनोज को कस्टमर को लेके आने के लिए, so I will be making a loss and my company will never be stabilized. Okay, आज आप फ्लिपकार्ट देखोगे, Flipkart is still not profitable. Oyo is still not profitable. जितने भी आप ऑनलाइन का देख लो, none of them is profitable. The reason being their customer acquisition cost is more than their customer lifetime value. Understand the simple concept है, लेकिन ये concept पे पूरा business खड़ा होता है. Okay, I always tell my clients that never ever exceed your customer acquisition cost. Always have your customer lifetime value more than your customer acquisition cost. Okay, now आप customer lifetime value कैसे बढ़ाओगे? These are the 9 actionable steps, which also includes customer service. Okay, सबसे पहले आप जहां पे भी जाओगे, रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, ईमेल हो, फोन हो, कंटेंट हो, you will start developing a relationship. Personalize the experience for the customer. Okay, implement a customer centric policy. Just बोलने के लिए नहीं, honestly implement a customer service policy. Okay, कस्टमर को रिवार्ड करना बेसिस द लॉयल्टी. ऐसा नहीं कि एक महीना आ गया तो उसको रिवार्ड करो. अगर वो आपके साथ 6 साल से है, 5 साल से है, 3 साल से है, रिवॉर्ड हिम, मेक हिम योर ब्रांड एम्बेसडर. ओके, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस मॉडल रखो. इन स्मॉल बिजनेसेस, इन B2B, governance model is the make and break. Every month at Sodexo, at Vendyman, I used to have a customer review कि बॉस you said it, we did it. ये मेरा पॉलिसी होता था, आपने बोला हमने करा. एवरी मंथ के रिव्यू में तो दे यूज टू गिव मी 5 पॉइंट्स कि प्रकाश ये इंप्रूव करो, ये इंप्रूव करो, ये इंप्रूव करो, एंड मैं वो करता था. एंड आई यूज टू गो एंड डू द रिव्यू. ओके, प्रोवाइड मल्टी चैनल कस्टमर सर्विस. आपका वेबसाइट है, फोन है, टेलीकॉलर है, सेल्स पीपल है, मार्केटिंग पीपल है, सब जगह से सीमलेस कस्टमर सर्विस होना चाहिए. लिसन टू योर कस्टमर्स,
use customer success software if possible and if it is affordable, and find ways to upsell and cross sell relevant products. So coming on to the last leg of our discussion, orchestrate and stimulate referrals. Referrals मैंने जितने लोगों से भी बात करी है, मुझे सब लोग यही बोलते हैं कि हाँ प्रकाश, हमने एक बार पूछा था मैंने एक कस्टमर को, तो उसने मुझे 2 रेफरेंसेस दिए. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. But is referral a one-time strategy or a continuous strategy? Please time 1 and please time continuous for C. If you believe it's a one-time strategy, please type 1. If you believe it's a continuous strategy, please type C. Okay, okay, 2 C. Akshima is saying C. Anyone else? Continuous. Jagat is saying, Prahlad is saying C. Okay, beautiful. Okay, so people who say continuous and people who I believe the other people believe referral is one-time strategy. So having said that, but people who believe that it's a one-time strategy, then it is not. People who believe it's a continuous strategy, then it needs to reflect in your strategy. Okay, Uber India में खड़ा हुआ है पूरा referrals के ऊपर. When Uber started, I used it Uber myself in Bangalore. Uber पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था रेफरल. ओके, आप 4 दोस्तों को लेके आओ, एक ट्रिप फ्री मारो. ओके, वैसे पूरा मैं 1 महीना घूमा बिकॉज आई हैड माय ओन स्टार्टअप. मेरे पास पैसे नहीं थे, सो मैं ये सब जुगाड़ करता था. तो उबर मैंने बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया था. दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी. ओके, मैं पूरा 1 महीना एक भी पैसा उबर को दिया नहीं. आई जस्ट मैंने मेरे पापा मम्मी भाई बहन सबके मोबाइल से मैंने रजिस्टर करा and 1 month I moved, but it was a beautiful strategy. उसके बाद मैं Uber से 1 साल के लिए बैन हो गया for ये, but then I used it. Okay, so referrals has to be your continuous strategy and it needs to be elaborated. Okay, when to ask referrals? Can anyone type when to ask referrals? Whenever, can anyone type? सेल के टाइम पे, पोस्ट सेल के टाइम पे, नेगोशिएशन के टाइम पे कब पूछना चाहिए रेफरल्स? I would love to hear from you. When to ask for referrals? Once deal is closed. Yes, more people. I think there are good number of people who are there. Can you please type before purchase? Neeraj, okay, great. Sham, we will talk about it, but then you need to put in your comments. After sale, on taking the order, before purchase. Absolutely fantastic. So there is no right or wrong answer once you start delivering the product. So भैया referrals ना start से लेके end of sales journey you need to ask him. Okay, जब आप cold calling कर रहे हो, आपने credit card, I am sure आप सब लोगों को credit card का call आया होगा, right? I will take 5 minutes. I am extending a time. Rimnit, that is okay, right? Can we extend this by 5 minutes if that is okay? I'll just take 5 more minutes to finish off my discussion. Yes, sir. Please continue. Yeah, thank you. So when I say referrals, जब एक क्रेडिट कार्ड वाला फोन करता है मुझे, मैं ना भी बोलता हूं तो वो बोलता है कि सर आपके कोई दोस्त को लगेगा, आपके कोई बॉस को लगेगा, कैन यू प्लीज गिव मी रेफरेंस? हैज ही क्लोज द डील? नो, इट इज जस्ट द कोल्ड कॉलिंग. सो रेफरेंस का कोई माई बाप नहीं होता है. यू कैन आस्क एनी टाइम एनीवेयर. आप नेगोशिएशन के टाइम पे करो. नेगोशिएशन के टाइम पे ब्यूटीफुली इट वर्क्स. प्रकाश, आई नीड डिस्काउंट 10% ऑन दिस. ओके सर, आई विल गिव यू द डिस्काउंट. नो वरीज. आप मुझे एक कस्टमर का मुझे रेफरेंस दे दीजिएगा so that I can sell it to him and I will give you the reference. Negotiation के टाइम पे, right? Never do negotiation without taking something. Okay, so referrals आप कहीं पे भी कभी भी use कर सकते हो. It can be during demo stage, it can be during negotiation stage, it can be during deal close stage, anytime. So please आप दिमाग से ये निकाल दीजिएगा कि after sales के बाद ही मैं करूंगा. नहीं, over the entire sales process you should be asking for referrals. Okay, at the end of the day, which is the 9th block in the last sales process, अगर आप measure नहीं कर पाओगे ना, जिंदगी में we will never be able to control it. That is the overall saransh. You need to measure, you need to control it. Okay, last, this is one of the, for one company I have developed this entire sales process. When we talk of B2B sales process, we need to be very clear, boss, कि क्या stages है sales के. Okay, ये उस company के stages है. Okay, so to be assessed,
मतलब ये उनकी फर्स्ट स्टेज है, मैं असेस करूंगा क्लाइंट को, ये मेरी बायर की स्टेज है। ओके, सेल्स अगर आप देखोगे तो दिस इज अ बायर, सॉरी, सेल्स स्टेजेस। अपॉर्चुनिटी को डेवलप करूंगा, सॉल्यूशन डिजाइन करूंगा, पेंडिंग डिसीजन रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन रहेगा, साइंड बट नॉट ओपन, एंड लास्ट में वन। ओके, नाउ दिस इज माय सेल्स स्टेजेस। बायर के भी तो स्टेजेस होंगे ना, राइट? योर सेल्स स्टेजेस शुड मैच द बायर सेल्स स्टेजेस। ओके, जब मैं उसको एसेस करता हूं, मैं उसका स्टेज होता है अवेयर, मतलब उसको प्रॉब्लम समझ आ रही है एंड ही इज अवेयर ऑफ हिज प्रॉब्लम। जब मैं अपॉर्चुनिटी डेवलप करता हूं, मैं अपॉर्चुनिटी डेवलप करना मतलब मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूं, उसको टटोल रहा हूं, उसको देख रहा हूं, मैं उससे बात कर रहा हूं एंड ऑल। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट का स्टेज है, ही इज रिकॉग्नाइजिंग हिज नीड्स, उसको पता चल रहा है कि मेरे में दिक्कत है, ये चैलेंज है, ये सोल्यूशन चाहिए मुझे। ओके, जब मैं स्पिन से बात करके सोल्यूशन डिजाइन कर रहा हूं, मैं ही इज अवेयर ऑफ हिज नीड्स एंड अवेयर ऑफ ऑप्शंस। ओके, जब डिसीजन पेंडिंग है, इसका मतलब ये है, उसका स्टेज ये है कि ही इज इवेल्युएटिंग सॉल्यूशंस विद योर कंपनी और मेनी अदर कंपनीज। ओके, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, इसका मतलब ये है कि परचेस लेवल, उसके लेवल पे परचेस के स्टेज पे आ चुका है। साइंड बट नॉट ओपन, इसका मतलब है कि अग्रीमेंट साइन हो चुका है एंड ट्रांजिशन इज हैपनिंग। दिस इज वन कंपनी का सेल्स स्टेज। आई एम श्योर every MSME, every institution sales that is happening in every B2B segment that is happening in, you will have your sales stages. Define the stages and understand what are the activities that will happen in these sales stages. सिर्फ आइडेंटिफाई करके कोई मतलब नहीं है, सेल्स का बंदे को पता होना चाहिए हर स्टेज पे क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए। अगर वो उसको नहीं पता, he will always go and wing it and never be able to close the deal. So डूइंग अ क्विक रिकैप, हमने सेल्स कैनवस की बात करी थी। सो रेखा हैज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड हाउ द एंटायर शिफ्ट हैज हैपेंड इन द B2B, in the sales dynamics itself. Okay, then we have understood the three ways of managing that customers, buyers. Okay, then we were talking of strategy, creating a complete gap strategy using the sales canvas. Sales canvas is overall sales strategy. उसके बाद सेल्स प्रोसेस 9 स्टेप में है। These are the 9 steps. पहले, सबसे पहले माइंडसेट बना के चलता हूं मैं, फिर मैं कस्टमर को आइडेंटिफाई किया, प्रोस्पेक्टिंग किया, कस्टमर को मैं लीड नर्चर कर रहा हूं, मैं फार्मिंग कर रहा हूं, मैं उसके दुख दर्द जान रहा हूं मैं स्टेज 2 में। देन मैं मैनेज कर रहा हूं उसको ऑब्जेक्शंस इन माय स्टोरी टेलिंग, इन माय पिच, एंड देन मैं नेगोशिएट कर रहा हूं अंडरस्टैंडिंग माय ऑल्टरनेटिव्स एंड रिजर्वेशन प्राइस। द बिगेस्ट पावर दैट अ नेगोशिएटर हैज इज वॉक अवे प्राइस, मतलब एनी टाइम ही कैन वॉक आउट। ओके, देन मैं क्लोज कर रहा हूं आस्किंग फॉर द ऑर्डर। देन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में अंडरस्टैंड कर रहा हूं, बिकॉज मुझे कस्टमर सिर्फ एक दिन के लिए नहीं चाहिए, मुझे पूरा लाइफ टाइम के लिए चाहिए, उसका वैल्यू मुझे चाहिए। अगर वो कस्टमर मेरे से ज्यादा टिकेगा नहीं तो आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दैट, राइट? देन referral as a strategy need to be integrated right from day one, and referrals can be asked anywhere, anytime, and everything has to be measured, boss. If you can't measure, you can't run the business. It's as simple as that. And what is a successful sales model? आज जो इंडिया जीती है, एग्जैक्टली दे हैव फॉलोड दिस। अगर आप देखोगे तो ओके, सबसे पहले बिलीव से दे मैदान में उतरे, एंड दे स्टार्टेड बाय डूइंग व्हाट वाज नेसेसरी। व्हाट वाज नेसेसरी इन टुडेस मैच? मैनेजिंग द विकेट्स। विकेट्स बचा के रखना वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दे प्लेड इन द टाइम, नॉट विद द टाइम। ओके, what was necessary? First half hour or 2 hours of the session, doing what necessary. What was necessary? To manage the wickets. Then doing what's possible. Then what was required? कि runs scoreboard पे tick होते रहना है, होते रहना है, होते रहना है, होते रहना है. And suddenly what has happened? You are doing the impossible. Impossible. After 31 years, India won the match, which was impossible. एक दिन में 328 का टारगेट चेस करना was a Herculean task. एक या सवा दिन में, whatever it is. Okay. So always इतने चीजों से ओवरवेल मत हो जाइएगा पूरा प्रेजेंटेशन में. Always understand कि you need to start by doing what's necessary, then by doing what's possible, and suddenly you are doing the impossible. I always say improve your resume, CV, to get more possibilities and opportunities. At High Sales, we train people, we give them all the tools and techniques to make it happen through sales consulting, coaching, and training. And these are few of the associations that we have, and these are few of the clients that we are already doing in. So thank you, team. I have extended by 5 minutes, but I thought it was necessary. And now I am all yours, open for question.
Yes, sir. We can take the queries of the participants, and Absolutely. participants, they can show a raise of hands, so we can take one by one. So we can start with Mr. Shyam. So you can speak. We have requested you to unmute. Mr. Shyam Dubey, can you hear us? So I would really like to ask that how can how can we pass on our belief system to our team? Because being an owner, we have that belief system, but at times we need a team effort. So can you just throw some input on that? Absolutely, Dimple ji. So, belief क्या है ना? So when we run an organization as an entrepreneur, I am also an entrepreneur, right? A serial entrepreneur. Plus, I have worked professionally. वो नीचे ड्राइव करना ना बहुत मुश्किल होता है. When ऐसे मुश्किल होता है, because you need to put in that right kind of efforts. Okay. Now, what is the kind of culture that you want to build in? It all depends on that. So you need to start evaluating your results. Like let's whatever. अगर revenue नहीं बढ़ रही है, तो start evaluating your results and work backwards. Okay. Why revenues is not happening? Example, deal close नहीं हो रहा है. Okay. Why deals are not closing? Because the salesperson is going unprepared. I'm just giving a hypothetical scenario, right? Why the salesperson is going unprepared? Because he is not confident to face the customer. Why he is not confident to face the customer? Because he is a very introvert person. He doesn't like to go out in the. बट जब हम इंटरव्यू करते, जब बात करते, ये सब हमने देखा ही नहीं था, जाना ही नहीं था, उसका रिज्यूमे पे हमने चेक करके उसको ले लिया. ठीक है. So you, as a owner, as a business owner, you need to sit at least with your front line, immediate front line, and sit with them and drive this. And this is a training, Dimple ji. ये वो होता है ना कंसिस्टेंसी. अगर आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. एंड एवरी मंथ देयर हैज टू बी सस्टेन्ड ट्रेनिंग टिल इट बिकम्स अ हैबिट. आज आज मैं जब भी सवेरे उठता हूँ, मेरा प्रॉब्लम ये है कि इतना ट्रेंड हो चुका हूं मैं, मोबाइल सबसे पहले उठाता हूं मैं चीज, ब्रश भी नहीं उठाता. Okay, so it has to become go into your psyche, and only if it goes into the psyche of the person down under, he will be like you. But उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको. What kind of organization that you need to be setting in, and you need to, at least for the first 6 months, 9 months, 1 year, you need to handhold and you need to drive that diligently. Only then it will happen. So no shortcuts. Thank you, sir. Any other query? या रिमनीत, आई एम गेटिंग अ फीलिंग दैट या तो प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया था कि क्वेश्चंस के कोई मतलब गुंजाइश नहीं रही, या तो फिर बहुत ही वीक. but still if there are any queries we can take up. नो आई एम जस्ट किडिंग. या क्योंकि क्वेश्चंस आ नहीं रहे, सो या तो बहुत ही बाउंसर था कि गया समझा ही नहीं. नहीं sir, it was perfectly fine. I have another question. Yeah, please go ahead, Dimple ji. I think she got logged off. Yeah, meanwhile, any other questions, queries? Alka ji has asked me, can you please share few suggestions for the firms which may be exploring the option to open themselves up for starting institutional sales? Alka ji, you need to help me understand किस तरह का प्रोडक्ट है आपका और किस तरह का सेल्स करना चाहते हैं आप. Then I will be able to throw some light कि उसको किस तरह से you need to build up your entire organization. Because ये दो चीज के बिना I will be handicapped to give you any inputs. Okay, FMCG and home care. Okay, so understood. So and so there are both options. Online options आपके पास है, offline options है आपके पास. Okay, online options अगर B2B करना है आपको तो you have your Amazon, Big Basket and Flipkart as well, wherein you can log on and you can be their vendor or their customer, and then you can start supplying. That is shop in shop concept that we call. And in the offline model तो आपके distributors, dealers वाले network already होती है, wherein you can do that. But apart from that, if you are a startup
all this will be difficult for you, but Amazons of the world, Flipkarts of the world are easy, and उसके लिए कोई जरूरत लगती नहीं है. But you need to use your frog framework. Friends, relatives, organization, geography. सबसे पहले तो आपको पूरा लिस्ट बना लीजिएगा कौन आपके दोस्त है. आपने कभी किया नहीं होगा एक्सरसाइज, लेकिन कर लीजिएगा. इससे ये पता चल जाएगा कि आपके ऑनेस्टली कितने फ्रेंड्स हैं, और ऐसे कुछ नाम भी याद आ जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. ओके, सबसे पहले वो लिस्ट क्रिएट कर दीजिएगा, एंड देन स्टार्ट लुकिंग कि कैसे रीच आउट उनको करना है. फोन, मोबाइल, जीमेल, फेसबुक, लिंक्डइन, जो भी हो, एंड देन स्टार्ट क्रिएटिंग योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट एंड segregating it the way I have told a while back. I hope I am able to answer that to a certain extent. Yes, Dimple ji. Sorry, I lost the connection. Sir, I have recently started using this spin selling technique. So I really have one question. When we ask need-based questions and all, then while doing this cold calling where we are interacting to a total stranger person, how do we understand their buyer persona and everything? So buyer persona will never happen after speaking to the customer. Buyer persona will always happen before you even go to the customer. So buyer persona कब बनता है ना डिम्पल जी, कि मुझे किसको टारगेट करना है. Let's say if I want to target Dimple, I will create a framework saying कि ये एज है, ये डेमोग्राफिक्स है, चंडीगढ़ में ही रहती है, एंड शी लाइक्स इंडियन फूड. ये तो ये मैं पूरा प्रोफाइलिंग बनाता हूँ, मैं सेल्स को बंदे को देता हूँ. इस तरह का प्रोफाइल में जितने भी कस्टमर्स आएंगे आप उनको टारगेट करिएगा. ठीक है, सो दैट इज नंबर वन. सो कस्टमर पर्सन ऑलवेज कम्स बिफोर रीचिंग आउट टू द कस्टमर. सेकेंड, व्हेन यू डू कोल्ड कॉलिंग, you always need to have your objectives in place. When I say objectives, आप कोल्ड कॉलिंग करते हो डील क्लोज करने के लिए नहीं. ओके, कोल्ड कॉलिंग करते हो, क्या है आपका ऑब्जेक्टिव? मेरा कोल्ड कॉलिंग का जब भी ऑब्जेक्टिव होता है, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, मुझे वो मीटिंग का टाइम दे दे. सिंपल, मैं एक ही ऑब्जेक्टिव रखता हूं मैं. ओके, आजकल सोशल मीडिया पे मैं पूरा रिसर्च कर लेता हूं मैं उसके बारे में, और मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे मीटिंग का टाइम दे दे. एंड दैट्स हाउ आई क्रिएट माय एंटायर स्क्रिप्ट. Okay, so you need to be very clear about your objective, and then things will happen. And जब आप गुफ्तगू होगे, मतलब आमने सामने बैठोगे, तब discussions आगे बढ़ेंगी. That's what my suggestion would be. Right, I got it. And sir, any tips on how to, increase your conversion ratios? Sales velocity. Sales velocity. So what happens? Sales velocity. आप लोगों ने शायद गौर किया है, नहीं किया, इट्स ब्यूटीफुल. ये नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अगर आपके कन्वर्शंस बुरे हो रहे हैं, ओके, इसका मतलब ये है कि आप अपॉर्चुनिटीज जो सेलेक्ट कर रहे हो वो खराब सेलेक्ट कर रहे हो. इसका मतलब ये है कि आपका जो एवरेज टिकट प्राइस है वो खराब है. इसका मतलब ये है कि आप समय से ज्यादा ले रहे हो क्लोज करने के लिए. ओनली दोस 4 पैरामीटर्स. ओके, so you need to identify what is going wrong in all those 4 parameters, right? अगर आपका conversions बहुत ज्यादा wrong हो रहा है, इसका मतलब आपका opportunities are not good. Opportunities अच्छा नहीं है क्योंकि leads अच्छे नहीं है आपके. Leads अच्छे नहीं है क्योंकि आपने define नहीं किया है. आपने define नहीं किया है क्योंकि आपको idea नहीं है. आपको idea नहीं है तो अभी idea लेके उसको implement करिएगा. We have one query from Mr. Ajay Pratap Singh. So you can. Yeah, how to win? Is that the question, Rimnit? So How to win the showing the raise negotiation of when you hand. don't? Yeah, is that the Ajay ka? Yeah, Mr. Prakash, this is the same question what I wrote to you directly. Okay, okay. So normally how because to win? like how to win the negotiation, because what happens, because some number of times we say, because as a company we are not selling the opium, so our products like costly, so there is not much differentiation in terms of the quality. Okay, so suppose if you are not having a very less price, you can say because the price point is first. Sir, belief, sir, sorry Ajay ji, मैं आपको रोकना चाहूंगा. Belief आपकी यही थोड़ी गड़बड़ा गई है. We don't have, आपने मन में बना लिया है हमारा क्वालिटी ज्यादा डिफरेंट नहीं है. आप ऐसा ना बोलिएगा. आप बोलिएगा कि our product is best and I believe that my product will do wonders to the customer. So now continue. Continue, Ajay ji. Sorry to interrupt you.
but No, I just thought. No, because actually what happens, because we are dealing in the industrial paints, so normally the decision making goes with the after number of trials and then followed by the quality checks, different. So they go with their parameters. They say whatever right now what we are using and what you are offering, there is no sizable or like a which can be the kind of a USP kind of difference is there. But your prices, okay, your prices are, so why we should entertain you? Why we should Can I answer that? Yeah. So I was at Sodexo, and Sodexo is into, I don't know how many people are aware of it, but apart from meal cards, Sodexo is the #1 player in India in the catering segment. Okay. Mhm. Now, Sodexo का अगर मैं ब्रेकफास्ट मेरा ब्रेकफास्ट होता था 40 रुपए 50 रुपए का. ओके. एंड वही एक नॉर्मल कैंटीन वाले का ब्रेकफास्ट होता है 20 रुपए 30 रुपए से ज्यादा नहीं होता है. मैक्स, दैट इज अ मैक्स. Okay. Now, do you think what will the customer say? Ki Prakash, why should I pay 2 times or double the amount when I can get the same idli vada at 10 rupees or 20 rupees? Okay. So, sir, मेरा वही है, वापस I will go back. Please never believe that your product is, आपने लिया है product तो कुछ ना कुछ तो difference होगा. So even in Sodexo, the difference was not the product. Okay, the difference was not the product. The difference was the service and the compliances. Okay, स्कूल के एग्जांपल देता हूं मैं. अगर स्कूल का बच्चा एक भी खाना खा के बीमार पड़ गया, द काइंड ऑफ रेपुटेशन दैट डैमेजेस द स्कूल, एडमिशन पे दिक्कत आ जाती है. ओके, नाउ इफ द स्कूल इज ओके टू हैव दैट काइंड ऑफ रिस्क, दैट इज अप टू देम. फिर छोड़ दीजिएगा उन पे. दैट इज नॉट द राइट कस्टमर देन फॉर यू. ओके, बट द स्कूल अंडरस्टैंड्स कि बहुत से प्रोडक्ट में दम है, सोडेक्सो कंप्लायंस है, कहीं पे भी चीटिंग नहीं करेगा, ऑल सेफ्टी मेजर्स विल बी टेकन इनटू ये. दैट इज द वैल्यू दैट सोडेक्सो प्रोवाइड्स. सेफ्टी एस्पेक्ट. Product was not my USP. Safety and compliance was my USP. So in your case, if there is no differentiation, the discussion will always be on price. That's what I always believe. Commodity में challenge, मैं आपको एकदम सिंपल उदाहरण देता हूं मैं. बटाटा, पोटैटो, ऑनियन. ठीक है, पोटैटो एंड ऑनियन आर कमोडिटी. अगर मुझे ऑनियन 5 रुपया या 10 रुपया चीप मिलता है बगल वाले के पास, मैं उधर से लूंगा बिकॉज देर इज नो डिफरेंशिएशन. बट इफ आई एम पुटिंग ऑर्गेनिक ऑनियन ओवर देयर, आई कैन चार्ज 20 rupees more or 30 rupees more. Okay, so what I'm trying to say is there will always be difference. Create it, it will happen, and then you need to sell it on that particular value. Product may not be the USP, but there will be something else. Create it, or else you will be always weak on negotiation. Okay, thank you. Any other questions? I think Aditya का एक question था which I missed out. What difference should I focus in while targeting institutions like schools, colleges, which are not purely for profit compared to the business industry? Okay, Aditya, this is I have spent 8 years in education segment, so I should be able to give you some insights onto this. But then if you can help me, what are the kind of products that you are looking in for? So if you can type it, that would be great. If no, let me give then a general, okay, aid for students. What aid? Is it some kits? Is it medical aid, teaching aids? Okay. So I am consulting one of the company right now, which is into teaching aid. This company is based out of Meerut. Okay. मैं ये सेशन के पहले उनके साथ ही मेरी डिस्कशन थी. So none of the schools are in for profit. Sorry, non-profit. NGOs, कोई school NGO नहीं है. Okay. Even during COVID, they have charged the fees. They have taken all their money. They have done everything. So every school, every school is running like an organization, right? The only thing is, it all depends on the kind of product that you are selling in and the kind of people you want to sell in. Like when I was selling food, I was focusing only on the admin heads. Okay. When it is teaching aid, you need to focus कि ये teachers को है, principals को है, trustee को है. Basis on your target profiling, you need to create your sales pitch and start selling to them. Okay, but ये भूल जाइएगा कि school is an NGO. No, they are in for profit. They are also stressed out for money, and they are finding ways and means to get the money out of the parents' pocket.
So Akshima, I just shared the framework with, I think, Dimple or someone. I don't remember the name. Frog is the framework that you need to be moving in your immediate circle that you need to be reaching out to. Akshima का एक है, sir, at times asking for referrals from family and friends doesn't go well. Yes, you are right. So you need to be very clear कि वो आपको उस फैमिली के साथ रिलेशनशिप बनाना है या बिगाड़ना है. So, ये अगर आपको डिफरेंस पता चल गया, अगर आपको बनाना है तो फिर देख लीजिएगा कैसे मैनेज करो. अगर बिगाड़ना है तो बिंदास पूछो यार, क्या टेंशन है. No, so yeah, so sorry. So that was one. So one more thing, Akshima. So what happens is, it all depends on the kind of services that people are comfortable with. If your parents or relatives are seeing that you are adding value to whomsoever is concerned, तो कोई भी अपना नाम से रेफरल ना बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है. अगर मैं भी आपको रेफरल देना चाहता हूं, इसका मतलब ये है कि मैं अपना नाम रिलेशनशिप दाव पे रख के दूंगा. मैं अगर आपने खराब काम किया तो आपका नाम नहीं खराब होगा, प्रकाश का होगा. एंड दैट इज द वन रिस्क व्हिच रेखा हैज मेंशन्ड, परसेप्शन रिड्यूस्ड रिस्क. ओके, मैं अपना रिस्क रिड्यूस करने को हमेशा ट्राई करूंगा. अगर मुझे लगता है कि अक्षिमा सही तरीके की सर्विस नहीं देती है, तो भला मैं उसका भाई हूं या बहन हूं या जो भी हूं, आई विल नेवर रिकमेंड अक्षिमा. So you need to first create that trust and create that value, and people will start referring you. It can be family, it can be friends, it can be organization. So, sir, if there are any further queries, participants, they can connect with us offline. And I would like to, thank our expert speakers, Mr. Prakash Bhatna and Ms. Rekha Agashe, for sharing their expert views with us. And we learned very important institutional selling concepts. I'm sure participants will now be able to build their own sales model canvas, sales success blueprint. They will work on FRO concept, how to farm the leads, lead nurturing, then how to adapt shift in buyer behavior, and they will also understand dynamics of modern B2B sales. So this is required as sales have been tough post-COVID and new norms have been established. So I think we all must commit to doing the impossible, as Prakash sir mentioned. And I thank all delegates for actively listening and participating in the session. Hope they find the session fruitful and it met their expectations. And we look forward to, organizing more such interactive sessions in near future. And I thank each one of you for participating. And we wish to see you in our future program as well. Thank you all. So, Rimneet, from my end, thank you very much. Thank you, Rimneet, and thank you, Madhuji, for giving us this platform and interacting with such beautiful audience out there. And it's still a full house, and I can't believe that it's been almost 2.5 hours, and then people are still hooking onto this. So it's been a pleasure, and I hope I had been able to, me and Rekha, been able to add value. So this is just a trailer. Definitely more things will happen. So we had tried to condense the content as much as possible. This is a month-all session and so on and so forth. So let's see how it shapes up. But then thank you very much for the opportunity, and thank you everyone. Thank you. Stay blessed. Rimneet, thank you so much, and wonderful interacting with the PhD Chamber of Commerce and the lovely audience. And we hope we have added value to all the audience who have been here. So guys, take the first step, take the actions, and happy selling to all of you. Thank you so much. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye.